Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the level of organization in an organism. First of all, we will discuss about unicellular organism. As we all know that unicellular organism is made up of only one cell. Therefore, a single cell is only responsible for performing all the functions like digestion, excretion, reproduction, respiration and other types of functions. For example, amoeba. Amoeba is made up of only single cell. As we can see in this picture, this is the picture of amoeba. Amoeba has pseudopodia. Pseudopodia means false feet. Pseudo means false and podia means feet. So, therefore, this is known as false feet or we can say pseudopodia. Pseudopodia अपने फूड के अकॉर्डिंग और मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है. उसके परमानेंट फीट नहीं होते, उसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, बिकॉज स्यूडो मीन्स फॉल्स. As we can see in this picture, amoeba is a single cell and this is the only responsible for all types of functions. इस प्रोसेस में वो 5 टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. ये 5 एंड इट इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. फर्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं विच इज़ इंजेशन. फूड पार्टिकल इज आउटसाइड द अमीबा और स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है सेकेंड स्टेप में, विच इज़ नॉन एज डाइजेशन. एंड इन फिफ्थ स्टेप अमीबा इज एक्सक्रीटिंग आउट द फूड पार्टिकल which is and this process is known as egestion. तो इस प्रोसेस से, इस पिक्चर से हमें ये पता लगा कि अमीबा एक सिंगल सेल है, बट फिर भी सिंगल सेल ही हेल्प करता है उसके हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. We can see in this picture also these are the pseudopodia of amoeba and pseudopodia is helping out the amoeba to engulf the food particle. And in the fifth step, amoeba is doing excretion of food particle. Now, we will discuss about the multicellular organism. There are 5 levels of organization in multicellular organism, and these 5 levels are cells, tissues, organs, organ systems and organism. As we can see in this picture also, these are the 5 steps of 5 levels of organization. In the first step, this is cell, tissue, organ, this is organ system and this is the body of an organism, and these are the 5 levels of organization in a multicellular organism. Now come to the first level, that is cell. As we have discussed earlier that cell is the basic, structural as well as functional unit of all the living organisms. हम इसको स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, सेल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. सेल उसकी स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है. देयरफॉर वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड these are different types of cells of human body. This is nerve cell and we know that nerve cell helps to transmit
nerve impulses to organs which is located in different parts of the body. This is intestinal cell, ovum, blood cells, red blood cells, white blood cells, bone cells and sperm cell. These are different types of cells of human body. Now come to the second level, which is tissue. The group of cells, the group of similar types of cells is known as tissue. Tissues are made up of same type of cells grouped together and performing a specialized function. इसका मतलब है कि जो सेम टाइप के सेल्स होंगे, जो सेम टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज़. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के टिश्यूज़ शो हो रही हैं, विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. और ये टिश्यूज़ किसके बने हैं? Cells के. The group of cells is known as tissue. As we can see in this picture also, this is connective tissue, nervous tissue, cardiac muscles, smooth muscles, epithelial and skeletal muscles. Group of tissue, group of cell is known as a tissue. Now come to the third level, which is organ, and we can see this a group of tissue that work together is known as organ. जैसे हमने अभी पहले देखा कि सेल्स के ग्रुप को, सिमिलर टाइप के सेल के ग्रुप को हम टिश्यूज़ बोलते हैं, ऐसे ही टिश्यूज़ का एक ग्रुप होगा जो एक दैट वर्क टुगेदर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन. और हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स दिख रहे हैं, दैट इज़ ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, थायराइड. दीज ऑल आर ह्यूमन ऑर्गन्स. और ये किस चीज़ के बने हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स. Now come to the fourth level, which is organ system. Organ system किससे बनेगा? Group of organs से. An organ system is a group of organs working together. For example, digestive system. जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये digestive system है, और digestive system बहुत सारे ऑर्गन्स और वी कैन से ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड करता है. दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर, फ्रॉम माउथ टू द एनस, दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड हो रही हैं. माउथ, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, द लास्ट इज एनस. और इन सब ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना के क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम. और ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक इसका एग्जाम्पल है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द ग्रुप ऑफ organs is known as digestive system. Now come to the fifth level, which is organism. We can say that sum of all cells, tissues, organs and organ system makes an organism. ऐसा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने अभी देखा ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज़, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम. ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड करके एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनी. मीन्स एक पूरी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी. तो हम कह सकते हैं
कि group of organ system is known as organism. As we can see in these pictures also, here this is nervous, digestive, skeletal, excretory, respiratory, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स हैं. इन पूरी ऑर्गन सिस्टम्स को अगर हम ग्रुप टुगेदर करें, ग्रुप में करें, तो क्या बनेगी? एक ह्यूमन बॉडी बनेगी. इसी टाइप से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? ऑर्गन सिस्टम्स की. एंड ऑर्गन सिस्टम किससे बने होते हैं? ऑर्गन्स की. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, जो अभी हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम रिकैप्चुलेट करें. As we can see in this picture, this is the first level, cell. Group of cells से क्या बना? Tissue. Group of tissues से क्या बना? Organ. Group of organs से क्या बना? Organ system. And group of organs से organism की body. और ऐसे ही इस पिक्चर में this is cell, group of cells से tissue, then organs, then organ system, then this is organism. So this is all about level of organization. तो इससे हमें क्या पता लगा कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से. Therefore we can say that cell is the basic unit of life. Now we will discuss about difference between plant and animal cell, or we can say the comparison between plant and animal cell. We can see in this picture, plant cell has a cell wall, but animal cell does not have a cell wall. And cell wall provides rigidity to the cell. सेल वॉल की हेल्प से प्लांट सेल को डेफिनेट शेप मिलती है, बिकॉज सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड, दिस इज वेरी हार्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो cell wall helps plant cell to fix shape, in a fixed shape. We can see comparison between plant and animal cell. Plant cell has definite shape, but animal cell does not have fixed shape. And cell wall, plant cell has cell wall, but animal cell does not have cell wall. In the same way, plastid is only present in plant cell, because plastid helps the plants, different parts of plant to color it. For example, chloroplast help the leaves for the green color. This is responsible for imparting green color. In the same way, chromoplast is responsible for imparting other colors to the different parts of the plant. And in animal cell, plastids are absent except euglena. Vacuoles. In plant cell, large vacuole is present. As we can see in this picture also, this is vacuole. Plant cell has large vacuole, but in animal cell, either absent or are present only as small vacuoles. अगर हम इस पिक्चर को देखें, प्लांट सेल में सेल वॉल है, बट एनिमल सेल में एब्सेंट है. प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होंगे या फिर स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. सेल वॉल की हेल्प से प्लांट सेल को एक फिक्स्ड शेप मिलती है. वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. whereas animal cell does not have any cell wall.
In the same way, plant cell has chloroplast, but animal cell does not have chloroplast. These are the pictures of plant and animal cell. You can see in this picture the difference between plant and animal cell. In the next period, in the next lecture, we will discuss about the exercise and question answer of this chapter. Thank you.